आयुष तेरे लिए फेवरेट है भाई ये तेरा मतलब लाइक क्या ही बोलूं My भाई योर लव योर most लव most most awaited podcast, and my for jersey sure my jersey says it. bro look at the passion absolute passion ठीक है No, listen. Before you start, the normal days you start, but today I will start just to introduce our guest. Okay. Now, if you ड्रम रोल drum roll, if you Shalv remember our Srivastava first, introduce if, yourself no, bro no, if you no, I will. okay Then start. all right If you remember our first podcast, Let I used to it. we had talked about Shalv. Okay, we talked about yes encyclopedia. So here he is. There is nothing in the world of cricket where somebody's going. Could you see her? She went. I told her not to go and she still went. Okay. Please, देवाश्री तो ओपी कर दो देवाश्री तो the chat. मैं बोल रहा हूँ कि first में first podcast remember we had said कि we have a special guest who will be coming in a lot of our podcast. So this is the guy. This is the encyclopedia of cricket. This is the person Joy Bhattacharya goes to for facts. This is the person Harsha Bhogle goes to for facts. this guy knows how many runs Sachin यार Tendulkar over the top हो गया यार. this guy knows how much score what was Sachin Tendulkar's score at home cricket तो No, by the way, तुम्हें याद है एक रिकॉर्ड था स्कूल क्रिकेट में विनोद खामने सचिन तेंदुलकर का 664 रन कभी रिकॉर्ड है याद ही होगा ना 664 रन का स्कूल रिकॉर्ड था उसमें सचिन ने कौन सा पैड पहले पहना था उसको पता है ठीक है ये भगवान ये लेवल का बंदा है तो मैं वही बोल अबे तेरे को पता है उसका एक सुपरस्टिशन है तेरे को पता है भाई यार ये क्या भाई शुरू हो गया ये अभी से भाई एक सेकंड we just 3 minutes into the podcast और तू शुरू हो चुका है अबे नहीं जिसने भी उसका ऑटोबायोग्राफी पढ़ा उसने लिखा है कि उसका एक सुपरस्टिशन आई थिंक वो राइट वाला पहले पहनता है आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन ही बिलीव्स हां यार आयुष तू कुछ मत बोल आयुष तू कुछ मत बोल भाई मैं तो मजाक कर रहा था लोगों के घर का एड्रेस निकल जाएगा ये anyways pleasure to have you Shal and I think I will have a nice debate and we'll have fights match with छोड़ो नहीं who the Mumbai Indians supporter है but हाँ तो चलो संकेत you introduce the topic अच्छा so before starting हम explain कर देते हैं future test 11 ठीक है world 11 है हाँ so we're gonna predict and analyze कि 2031 which means 2030 का जो decade है उसके सबसे important test players कौन रहेंगे across the world all teams combined ठीक है तो जैसे best 11 basically so we're gonna put down names from every position we'll debate कि इस position में कौन better बैठेगा and all and then we'll finally decide and display our opinions on the team so let's begin all right so we shall do openers okay so Shal go first then okay so wait to be very frank openers yeah sorry go on openers right openers yeah correct so one two openers go on just give in your names and then of course explain the reason you're choosing that name so who goes first Shalv Ayush Shal all right yeah so basically I have 5 names on the list I mean me and Ayush can always find it down on 2 so to be frank I have Prithvi Shaw Zach Crawley and Will Pucovski who are the top 3 I mean one of those two for sure and then as outside chances I have Yashasvi Jaiswal and Ruturaj Gaikwad you don't have Shubman Gill no I have put him at number 3 oh, okay different approach okay already I have a lot of problems okay so okay no you tell me that who are your first two see I also have Zach Crawley so I think we can finalize Zach Crawley one explanation Zach Crawley has been good but so why far. Zach Crawley tell me the reason now you just can't agree on something and put his name no I will tell you why Zach Crawley see if you look at Zach Crawley's first class stats he averages 32 if you look at his one day test career so first of all it's a test team we are choosing for the day for 2031 and all the players by the way we are choosing are below 25 years old right so if you look at his test career his average is a very paltry 32 but the reason I'm choosing him because first of all if you just choose people on stats it's very easy to choose people correct right? The reason I'm choosing him is his work ethic is the potential I see in him there are 2 innings I will point out to for Zach Crawley by the way he's having a torrid run now okay the recently concluded only now when we're shooting the match just has got over between New Zealand and England he's got scores of 0-0-1 and 17 but the reason I choose him is that I just really like the compactness he possesses
two innings I have in mind. I think Shalv will agree. One is the 267, I think, Shalv, if I'm not wrong. 67 Correct. against Pakistan. That's a one-off Yeah. innings. But scoring 267, if somebody is scoring 267 in an international match, agreed, Pakistani bowlers are not that great. But you're No, gonna choose. no. Ayush, I disagree. Pakistan bowling is exceptional. I mean, Yeah, I mean to be that's very right. frank, No, I have Shaheen Afridi's name down the list. So Right. even Let's not that reveal every- anything. Let's not reveal anything right now. that everybody has. But I'm saying that the reason I have him is that number one is that, and secondly, one innings which is not of much substance. But if you remember, he when England came to India, first two test matches he slipped on something and he didn't play the test match. Third test match he played and he scored a 50, where nobody. I scored a 50 odd, and that was a very aggressive 50. He was Very aggressive. Yeah, right. And the way he battled, only 50 runs. The way he battled spin at that time, nobody he got out at the end of the day. Yeah, but But like even in the Joe- 50, like the 50 he scored, everyone was like scoring below 20 runs, right? At that moment. Yeah, The exactly. the total was below 150, I guess, if I'm not wrong. We have to check Yeah. that, but I'm saying that. No, just imagine that was the ping ball test where most of the batsmen were Exactly. not able to. Yeah, Right. Akshar Patel. And Right. the third reason I have him is that it's an interesting anecdote about it. See, as I said, work ethic. And at this stage, I don't think you can judge a player purely in performance. I think Correct. I'll tell you one interesting story about Zach Crawley. In 2017, okay, when he was not getting picked for the under 19 England team and everything, what he did was he took his coach Rob Key. Rob Key also who used to play for England. He took Rob Key and they went on an 8-day trip to India, and he Okay. just Yeah. to Dilip Bensarkar Academy. Okay, and he just played around 16, 17 spinners every day. And he Wow. said after his Pakistan innings, he said that helped him. So if a guy, and it was by the way on his own expense Acha. at that stage. Okay, at a young age, at a Right. young age, taking that decision because he thought my career is not going anywhere. Got So at it. that stage, he took the decision. So I think Wow. somebody who has that work ethic in him, मतलब determination और पूरा precaution एकदम अच्छे से है, right? yeah, he has I like that. technical flaws. Like I was watching the, I'm no Nasser this time, but I was watching the match and his foot is not coming towards the ball and he's throwing his hands and everything. Right, but in I that feel- case, even Prithvi Shaw has his drawbacks. तो लेकिन उससे थोड़ा dismiss Yeah. कर देंगे. Yeah, Correct. yeah. So that is the reason I have Zach Crawley. He's fixed, and I don't know. Shalv can tell his. Yeah, I totally agree. I mean that is one player we commonly agree on. So basically nowadays हमें overall package देखना पड़ेगा. It's not I hope just the that only stats. player. I hope the only player. No. साले को TRP चाहिए. हाँ No, भाई. not the only player. दो और होंगे, 2-3 और. हाँ, होंगे. मेरे को ना ज्यादा होंगे. bowlers में आएंगे, bowlers Ayush, वगैरह let me में. tell you. Let me tell you number 5 अपना same. भाई इसको Number कैसे? Without telling you what's yours. चल ठीक है, Number चल. Let's move on to the अच्छा first opener हो गया Zach Crawley. second हाँ, opener. settled. Second opener मेरा है the future of my team, Shubman Gill. Right. Even And I'll go अगर- for Shubman Gill. Even I'll go for And Shubman. अगर मैं My vote Shalv- towards Shubman. Okay, listen, let Shalv explain his Right. opening choice and I'll watch Shubman Gill first. देखो basically as we discussed with Zach Crawley, I know हर batsman के drawbacks होते हैं, but I mean going out of the podcast, me and Ayush have discussed it already. But we've seen Shubman Gill get out to swinging balls lots of times. I mean Prithvi Shaw तो अलग ही Pokemon है इस चक्कर में, उसको नहीं खेलना आता, swing हम सबको पता है. उसको नहीं खेलना आता, मतलब उसका हाथ Shall- पैर बॉडी वेट कुछ नहीं We जाता. will- भाई but मेरे if- साइड में एमआईजी क्लब है, क्या बोल रहा है यार, ऐसे मत बोल. But Shubman Gill, we've seen incoming balls is still fine, but the balls going away from him is pretty bad at it. देख So, at विराट number कोहली के 3 seems साइंस to be a अभी से pretty आ good रहे हैं. bet. हाँ, see, we don't know what is going to happen 5 years down the line. मतलब he might as well turn out to be another विराट कोहली की भाई एंडरसन की आके 12 बजाएगा. हाँ. तू जो judging- बोलने वाला था पता है मुझे. अच्छी बात. भाई थोड़ा ऑडियंस हमें पता चला हाँ, अभी ये ठीक जो है। चेक करना पड़ेगा. नहीं तू वही है। तू जो दिल में है तू बोल दे भाई, उसमें कोई अरे टेंशन नहीं है. तेरा ओपनर कौन है? हाँ. Yeah, to be frank, I had Shaw and Will Pucovski in mind, but I think if I have Zach Crawley, then I'll rather go for Will Pucovski because Zach Crawley can You hit know- through the line. मतलब वो run You know देगा. why? So you know why I also had Will Pucovski, but I'm telling you the reason why, and I have the reason I've written down also because I knew this argument will come. मैं थोड़ा निकालता हूँ. See, Will Pucovski, मैं उसका stats बोलता हूँ तुम्हें. Pucovski has an average of over 16 first class. Tremendous average of over 16.
Okay, so stats is immaculate. The reason I'm not saying is we know Pokowski. He has had issues with the short ball. Okay, I'll tell you around 3 times he literally has faced concussion, and he has this tour India happened, which the historical tour. The first 2 matches he missed due to concussion. Before that, he got into the team for the Sri Lanka Test matches. He got hit again, and he again faced concussion. So for an opener playing in Australia, okay, for an opener playing in Australia, if you have so many issues with the short ball, maybe see again everything is an assumption. We might be completely wrong, Right. but I feel for an opener playing in Australia, if you get hit on the head so many times, I can imagine 1970s getting hit on the head so many times, we would have not been alive because there were no helmets. For real. So I think as an opener in Australia, where the pitches bounce and everything, अगर तुम हेड पे इतना हिट हो रहे हो तो मुझे लगता नहीं कि तुम सरवाइव कर पाओगे. और एडिशन टू दैट उसके मेंटल स्ट्रगल्स भी बहुत है. अच्छा. तुम जानते होगे, शाल भी जानता है. नहीं, मैं नहीं जानता. उसने बहुत बार टीम मेंटल स्ट्रगल्स की वजह से क्विट किया है यार. To be honest, dismissing a person on that, it's not the right decision. But I agree. I'm not dismissing on him. Okay, it's his thing. But I'm thinking he should learn to battle it. Okay, learn to come forward with it. Right now, what I see of him is a very compact player. Okay, although the innings he got his chances in the inning, but he's a compact player. But the reason I somehow feel he will play for Australia, but at the World 11, I somehow won't have him because of the short ball problem and temperament. I think these are the two things where this is the reason why I Pukowski was a front runner, but discarded Pukowski for that. See, to be very frank, just basis that short ball thing, see, I agree that there are. That's a good insight, though. That's a good insight. देखो उसको short ball problem है, that's perfectly okay. And considering he's from Australia, that also makes sense. But basis that there are a lot of players in India who don't play spin very well. I mean, Rahane is a very good example of that. But the fact that is true. अरे सुन तो ले यार. हाँ ठीक. But the fact that he's very talented. I mean, देख शुभमन गिल का इतना problem है outside the often away swingers का. पृथ्वी शॉ का तो पेस ही problem है. उसको जब तक 120 वाले पेसर्स नहीं मिलते वो नहीं मारता. पर just because of the sheer talent that he possesses, now ठीक है short ball he'll overcome over a period of time. I mean he has to if he has to play for Australia. But just because of the sheer talent, I would keep him in my side. I mean, it is not easy to average 50 plus in Sheffield Shield. I mean, वहाँ पे सारे प्लेयर खेलते हैं. इंडिया की तरह नहीं, एक बार इंडिया पहुंच गए तो फिर घर बैठ के मौज करो. वहाँ पे सारे खेलते हैं. Stark, Hazelwood, Cummins, everybody is there. And I think New South Wales में तो सारे तुम्हारे पूरा ऑस्ट्रेलिया का bowling unit New South Wales में है यार. Nathan Lyon से लेके Mitchell Stark. So it's not easy. So that is why I would really want to keep him in the side. But I see it's between Gill and yeah, exactly. See, to be honest, Pukowski he's a great player. He's an amazing player, amazing talent, great potential. But are you willing to pick him over Shubman Gill? That's the question. Yeah, the difference is that Ayush is picking Gill as an opener, whereas I'm playing him at 3. So, I mean, we are picking the same players. It's just that the position matters. But the position has to be okay. So up to Sanket then. Let's keep him. Let's keep this position aside. Let's discuss on the third position, right? But listen, we can't keep every position aside. Okay? Of course. But see, this is the top order, so in that way, I can do it, right? Top order में हम लोग रख सकते हैं. So we have fixed up Crawley. Crawley is fixed. Yeah, Crawley at number 1. So who goes for number 3? Number 3, Shalv. Shalv already mentioned. Yaar, come on, I go for Shubman Gill. But why not Gill as an opener and as number 3? See, as I justified before, the problems outside off stump. Probably that is why I would like to keep him at 3. Yeah, but especially the away swingers. Right. But Shalv top 3 faces a similar kind of bowling. If you would have said, I agree, Ayush. I agree. But you know, see, there's a very rare instance where कि तुम्हारा opener पहली ball पे आ जाता है. Generally, they face 2-3 overs at least. 2-3 over खेल लेते हैं, and if they're not able to do that, then they are not capable enough of playing international cricket. नहीं, अगर 2-3 ओवर भी 3-4 भी टिक जाए, and मैं जो गिल का जो पॉइंट है, मैं बोलता हूँ तुझे कि देख वीरेंद्र सहवाग का भी स्विंगिंग कंडीशन प्रॉब्लम था, है ना? बट प्रेडोमिनेंटली देख, एक तो ये नहीं है कि जितना ड्रास्टिकली
पुकॉव्स्की का बाउंसर प्रॉब्लम है, उतना गिल खेल लेता है। हाँ ये बात ठीक है, ये बात है। और अगर मैं एक बात बताऊं, ये जो ऑफ स्टंप का चैनल है ना, वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट प्लेयर्स का प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, और द थिंग इज, तुम्हें ये जो चैनल है ना, लोग हिट करेंगे, बट यू हैव टू आल्सो बी अ वेरी गुड बॉलर टू हिट दैट। एंड इन इंडिया जहां वो प्रिडोमिनेटली खेलेगा, आई डोंट थिंक उसका इतना प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आई फील दैट गिल, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रोक मेकर। गिल इज स्ट्रोक मेकर एंड ही हैज बोथ द गेम्स। I think that is another reason not to keep him as an opener, because then you'll have two stroke makers at the top. You need somebody who can play through the innings, right? No, Somebody who can stay till the end. No, Zach Rowley is there. Zach Rowley is not a No, predominant. I would categorize Zach Rowley as somebody who would want to go for runs. See, I mean, he's not somebody like a Cheteshwar Pujara or one of those batsmen who will play. No, not the volleyball guys. I'm not talking about the volleyball guys. Basically, what I'm trying to say is, एक बैट्समैन होना चाहिए who has the, like a Dean Elgar. He does not go for runs. I mean, उसको ये नहीं है मैं 6 मारूंगा, मेरे को रन चाहिए, मैं 4 मारूंगा, मेरे को रन चाहिए. Interesting His question main aim is to hold the batting. Right, that's right. I agree with Shalv. But see, on the contrary, even Shubman Gill can play as a defensive player rather than a stroke player. Okay. If he wants to, right? And we have seen him in the IPL. I'll give you. KKR fans. Okay. This season, I think we need to forget. The second half is coming. But like, see, no. To be honest, we are making the wrong decision by comparing two formats altogether. Correct. That's not comparing. Wait, I'm saying that, okay, if you're talking about of somebody has to block and somebody, if you look at Virender Sehwag and Gambhir, they formed a formidable partnership. You can't tell. Okay, you will say Gambhir Napier 2009. 2 दिन खेला तो तेरा point होगा. But no. Still, I would not classify Gambhir as a stroke maker. I mean, you won't put Gambhir in the same category as Shubman Gill, would you? They're two different batsmen. Gambhir is not a blocker. You can't tell me Gambhir is a blocker. For sure. No, I'm not. What I'm trying to say is I don't want a batsman. Basically, what I'm trying to say is I'm not saying that I want a batsman who's going to not hit any runs and face 200 balls. No. Basically, what I'm trying to say is I just need somebody who just take the singles, let the other guys score runs and hold the unit, because मतलब जो भी मैंने लाइनअप बनाया उसमें ऐसा कोई बैट्समैन नहीं. You won't find Pujaras anytime soon. Pujara, the thing is, first of all, हम अगर 2031 Pujara ढूंढ रहे हैं, fooling ourselves. हाँ, anomaly हो जाएगा यार वो तो बहुत ही. मैं एक्चुअली हम नंबर 3 में डिस्कस कर रहे हैं. Exactly, नंबर 3 तू आयुष तू अपना बता क्या है. मेरा जो है वो निकलना टफ होगा. Patuma Nissanka. I know लोगों को पता नहीं होगा, but let me tell you his stats. Okay, his average is 64.53 in first class cricket. In first class cricket, he's played 4 test matches. Against उनका जो first class teams होगा मुझे क्या पता, गॉल, कोलंबो, जो अच्छा. which is mind you the 7th best in the history of first class cricket yet, and it's a fact. He's only bettered by the likes of Bradman and Vijay Merchant. Okay, it is 64.53. The man, he has a century on debut, and nobody who has in Sri Lanka, at least. I know Sri Lanka is overlooked at times, but nobody except maybe Avishka Fernando and Kusal Mendes, nobody has created such an uproar about it. And as Shalv said, if you look at his style of play, it's a very compact style of play. Not Pujara style of play, but still, he is pretty compact in his ways. So I can't see him getting discarded. I wouldn't really want to discard him, but my only argument would be that the century that he got was at number 6, and you're wanting me to put him at number 3. And that too over Shubman Gill or Pucovsky. And especially when he was playing the likes of West Indies, so not a really formidable bowling line. Understandable though. International century, okay. And Shubman Gill I have in my team. It's not that I don't have in my team. Shubman Gill is somebody I have. I'm not saying over Shubman Gill. And you can't tell me that if somebody bats at number 5 or number 6, they can't go up. Rohit Sharma is an example. That's right. Sehwag is an example. See, you have numerous examples, but you're judging him based on his performance at number 6, and he's not played a handful of matches. He's just played 4. No. Rohit played at least. Ayush, Rohit played at least 25 tests as a number 6, number 5 batsman. That is when he got promoted to the top. I have judged his first class stats also. And I feel
That, see, why I said 64.53 is first class stats, which is right up the order. Okay. And I feel that with those stats and with this kind of sheer talent coming in, there are 2-3 names I thought of also, just on looks. I thought of Nicholas Pooden. I thought of Finn Allen, but Finn Allen has an average of 19 in first class cricket. So there's no way I could have. I really See. wanted him to win my team, but no way. So I think Pathuma Nissanka, with the sheer volume of runs he has got, and Dekh, and the only Ayush, I mean, what you're trying to say is what gets Will Pukovsky the number 2 spot, if that is what you're trying to say, just basis his first class score. हाँ, No, right. Just but basis that. but Will Pukovsky, as I said, Will Pukovsky के साथ there has been serious issues. इसके साथ there might be serious issues, but it has not been found out yet. It has not been found out. Will Pukovsky के साथ first class से उसकी concussion issues है. Okay, चलो, an argument might be maybe because Australian cricket we know a bit more than Sri Lankan cricket. Okay, that might be a valid argument. But I'm saying with this guy, just the sheer the kind of aura he's got into, people are talking extremely highly. देख आयुष, And मेरे पास Will दो Pukovsky चीजें को हैं, नहीं बोल रहे हैं. दो चीजें हैं उसके अगेंस्ट. एक lack of experience. Yeah, see, lack of experience, I don't think सबके साथ lack of Of experience. course. Lack of experience तो रहेगा. I mean, that might not नहीं be a नहीं valid नहीं argument. देख, अगर मैं कह रहा हूँ lack of experience even in first class cricket, I'm not talking about international cricket right now, I'm talking about first class cricket. ये भी समझना पड़ेगा ना, first class cricket तुम्हें थोड़ा सा तो experience है. No, I'll tell you how many matches he's played. See, at अरे, this I age, think he's played 30 odd, यार. 30 odd at this age. How much do you expect him to play? Shubman Gill has played 14, 15, 20 matches. Shubman Gill. But are you gonna pick him over Shubman Gill or Deख, the Pukovsky? situation is different. Ayush, Shubman अगर Gill तू is- देखेगा तो Ayush, if you would see, well, I'm not too sure about it. Virat Kohli would have played less first class matches than Dan Christian. If you leave out the international cricket. इंडिया में यही सिस्टम है. Yeah. इंडिया पहुंच जाओ, फिर तुम्हें रणजी की तरफ देख हाँ, वो क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत ज्यादा प्रमोट भी करते हैं श्रीलंकन्स, है ना, बहुत ज्यादा. Sri Lankans and Australians, बहुत ज्यादा होता है. Australians and the English, नहीं, they नहीं, are but जो very भी हो, protective of their but domestic. sample वो size- स्कूल क्रिकेट ज्यादा खेल लेते हैं श्रीलंकन्स. नहीं, but उसका सैंपल साइज तुम 37 को कम नहीं बोल सकते. 37 देख, मैचेस में agreed. 64 एवरेज है. चल, हम आई थिंक मेडल्ड हो रहे हैं अभी. सो क्रॉली एक फिक्स्ड है, संकेत को भी बोल. नंबर 2-3 अपना है, इसका है गिल पुकोव्स्की. मेरा है गिल निशंका. गिल फाइनल है. So where do you think Gill is playing? Is it opening or is it number 3? एक वन डाउन टू बी ऑनेस्ट भेज के कोई फायदा नहीं है, तो आई थिंक ओपनिंग ही करा लो अगर कराना ही है तो. कि फिर टू डाउन, अगर टू डाउन बोलता शायद तो कुछ वैलिड आर्गुमेंट हो सकता था. नहीं, 2 डाउन मेरा एक स्पेशल है. हाँ, तो आई विल गो विद द ओपनर. बट पुकोव्स्की को हम लोग वनडी खिला सकते हैं. देख, actually संकेत का भी, you know why Sanket is saying that for the sheer reason कि हमारे दोनों openers they are going to go for it. They are radical batsmen. They are not defensive batsmen. एक defensive batsman नहीं. You need a defensive batsman in your top 3 for God's sake. So Nissanka is one, man. Nissanka is not a national stroke maker. Nissanka is somebody. Nissanka, to be very frank, Nissanka is already out of the number 3 debate. I mean, come on. No, there's no. He just hasn't done enough. He has the 7th best average in the history of first class cricket, Shalv. I don't care, Ayush. You don't care. Listen to me. You have to care. You can't listen. We know. We just don't go on stats. But if somebody has such, I don't know, such stats just hit you, which is 64 average. First class cricket in Sri Lanka. Who is the last player you got with such an average? देख, सैंपल साइज कम है यार सैंपल साइज कम है, तो ये भी तो समझ. 38 मैचेस कम है यार. देख आयुष, नहीं यार, देख 38 मैचेस कम नहीं है, लेकिन कंपैरिजन में भी देखना, लेवल ऑफ कंपटीशन कम है. अगर वो अच्छा प्लेयर है, निशंका अगर अच्छा प्लेयर है, तो इज इट हिज फॉल्ट कि सिस्टम खराब है? देख, इट्स नॉट हिज फॉल्ट ना, मैं उसको खराब नहीं कह रहा. आई एम जस्ट सेइंग दैट द कंपटीशन ही हैज इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. तो बट हु, चल, गिल एंड क्रॉली. ओके, गिल क्रॉली फाइनल है. They can settle for the opening part, but then I mean, what better option do you have at 3? Tell me names at 3. Who can you play at 3? देख, मैं तो फिर I will still go for Pukovsky. मैं भी. If you're not giving me Pukovsky at 2, I will put him at 3. मैं भी. He's one of those. To be frank, if you see how open, क्या? You want me Pukovsky open? If you're not letting me do that, so I'll put him at 3. He will face the first ball, get concussed, and then go out, and then you have to replace him. अरे भाई, वो देख, I don't care. I mean, he'll still be not out ना. हाँ, right. Just because he is Sri Lankan. निशंका first ball पे out हो जाएगा तो not out भी नहीं रहेगा. Concussion के बाद substitute मिल जाएगा.
मेरी बात सुनो. It's still a win-win for me. Just because श्रीलंकन है, you can't discard him. देख वो बात नहीं है यार, बात ये है कि पहले तो भाई अगर एक दिन विल पकाउस्की वो भी यंग है, अगर मेरे को पता ही नहीं प्लेयर के बारे में तो इसका मतलब उतने कुछ शोकेस नहीं किया है, राइट? अगर लोगों को पता ही नहीं है, देख और बहुत लोगों को पता है विल पकाउस्की ऑस्ट्रेलियन है. तूने स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि यू माइट नॉट नो हिम. But the thing, that is the reason. He just contradicted himself. Listen, that doesn't make him a bad player. I never said he's a bad agreed, player. I said he's agreed, but we are making the world 11 right now. No, let me tell you. Let's world 11 में ऐसे tell me something. Okay, the New Zealand के players होते हैं, ठीक है? देखो हेनरी निकल्स, जानता है तू कौन? People know Travis Head more or Henry Nichols more? Travis Head. अरे यार, everybody knows. But वो अलग डिबेट हो जाएगा यार. बात ये है. एक सेकंड. संकेत, एक सेकंड. This you are getting BBL into the contention and that is T20 cricket. Everybody knows Travis Head क्योंकि उसने लास्ट बॉल पे छक्का मार के अपना 100 पूरा किया था. और किसी वैसे कोई नहीं जानता. आरसीबी के लिए भी जानता होगा. नहीं, मेरी बात, वो तो एक बार गलती से 76 मार दिए थे उसने, याद भी है. बट हेनरी निकल्स को कितने लोग जानते हैं? पर उसका तुम एवरेज देख लो, 47 का एवरेज है न्यूजीलैंड में. ये न्यूजीलैंड का Ayush, you know Travis Head because he plays T20, not because of his test game. I'm talking about the general public. They know Travis Head more. They follow. पुकाउस्की ने कौन सा भाई खेल लिया अभी तेरा T20 वगैरह? नहीं ना, उसको टेस्ट क्रिकेट की वजह से जानते हैं. उसको टेस्ट क्रिकेट की वजह से जानते हैं. उसको टेस्ट की वजह से जानते हैं. Ayush, I think to recognition. You are talking about recognition from the wrong source. If he had got recognition from test cricket, then I would have agreed. Okay. Peter Hanscom. Okay. Leave Peter Hanscom. Cam Green. People know Cam Green more than Henry Nichols because he's an Australian player. He's just played test cricket. Ayush, I think we're just stretching it too much. Let's decide on this. Pukowski. I think I'll go with Pukowski. मेरा ये है. देख आयुष, I went for Gill at number 2, so you go for Pukowski at 3. Sorry Nisanka, but he will prove you wrong. He will. I just wish, I hope. Because Sri Lanka knew that the number 4 Ayush. I don't mind. Stop crying, number 4. Not crying, it's a true fact. Number 4. Okay, anyways, number 4. Very left field choice. I have two options. One of them will be my 12th man and one of them will be my player depending on the pitch. Washington Sundar and Cam Green are my two picks. Washington Sundar is at 5 for me. He can't play that up the order. I mean, you need to have a proper batsman. तू बता अपना शाल, तू बता अपना 4. I just have Ollie Pope there. Ollie Pope I have at 5. Because that is where he plays also. Ollie Pope I have at 5. Okay. Yeah, if Sundar plays at 6, then why have you put him at 4? हाँ, right, 4 बहुत unconventional हो गया यार for World 11. नहीं, he said उसने बोला left field है, but हाँ बोल. देखो, मैं तुम्हें एक ही एग्जांपल दूंगा, ज्यादा इसका कोई ना तो इसका बहुत सैंपल्स है. जस्ट समथिंग आई पर्सनली फील और मुझे देखा है. सिंपल गैबा टेस्ट. सॉरी मेरा ना गिर गया. आई थिंक ये भी एग्री नहीं करता मुझसे. मैं तो गावा का तो प्यार है भाई, तेरे को तो गावा टेस्ट मैच से मेरे को पता है. नहीं तू बस सिंपल गावा टेस्ट मैच देख. अंडरस्टैंडेबल. उस पोजीशन पे अब मुझे शार्द बोलेगा, मुझे पता शार्द क्या बोलेगा. शार्द बोलेगा शार्दुल ठाकुर को खिला ले. ठीक है. नहीं मैं वो नहीं बोल रहा. साले तेरे को पता है मैं क्या बोलूंगा, तो तू क्यों बकवास कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर उसने जो खड़े होके जो बैटिंग किया था उधर, ओके, एंड द टेक्निक ही हैज, एंड आई थिंक he is going in the Steve Smith mode. Steve Smith started as a leg spinner, batting at number. मैं बोल ही रहा कि उतना अच्छा प्लेयर बनेगा, but I just feel either Cam Green, and if I talk about Cam Green, his record, I mean, I'll just get back to you on it. His record is impeccable. Cam Green. The Cam Green को I think I'll choose Cam Green as my number 4 अगर मेरे पास मैं अगर choose I don't mind. Even I have kept Cam Green, but number 4 as like number 4. I think number 4 is. Let's go with Cam Green. Let's go with Cam Green, man. मेरा तो बहुत मल्टी डिमेंशनल क्या प्लेयर है यार, मजा ही आ गया तू देख. I said I have Cam Green or Washington Sundar. Number 5. Frank, I think number 4 पे Cam Green को डालने का एक ये ड्रॉबैक हो सकता है. देख, I agree that he's a very good player, a multi-dimensional player. Even I have kept him in my side, but I would keep him as a lower order batsman, not such. नहीं मेरे को I disagree. नंबर 5 में भी है ओली पॉप. तुम लोग दोनों ने कहा. नहीं, but number 5 पे I've kept Washington. No,
Oh damn. पोजीशन चेंज हो जा रहा है बार बार. See, the पहले thing गिल is, को लेके. I feel that we can't bat Ganguly down the order. हाँ वो तो देख फोर फाइनलाइज्ड है. Let's not अभी वो खेल रहे हैं But नीचे. are you telling me that 6-7 years down the line he's going to be as important as Steve Smith to the team just as a batsman? हाँ. Are you sure? Yes, I am sure. See, I am we sure. We can't Deख, predict anything. But Deख, he won't be. I'm not saying he won't be as good as Steve Smith, but he'll be No, as I'm important. not saying as important. Yeah, I'm talking about He'll him be being as important. He'll be as important. देख इसका और पुकास्की का चलता रहेगा. We feel. Number 5. I think ये certainty होगा. Number 5. यार भाई ऑलराउंडर्स का सर्टेनिटी था तो हार्दिक पांड्या. छोड़ दे. Number 5 बता मेरे को. Number 5 बता एक ना. By number 5 we have to go for Sundar. Then if we've got Green at 4, then we need to have Sundar at 5. You are discarding Ollie Pope. भाई हाँ Ollie Pope क्या talent है. अच्छा okay you just Sundar is 3D. I mean not referring to Raidu, but Sundar is 3D. Raidu was Vijay Shankar. I'm saying. No. अरे Raidu मतलब Raidu वाला incident was. You just told me that Sundar, you have your doubts on him batting at 4. Then how can you bat him at 5? Exactly. 4 देख भाई जैसे. That's just like saying that. That's just like saying. देख जैसे 1 2 3 में ज़्यादा difference होता है. जैसे 1 2 3 में सुन. जैसे 1 2 3 में ज़्यादा difference होता है वैसे ही 4 5 में ज़्यादा difference नहीं होता. हाँ exactly. 4 5 that is not true. If you're not playing. They generally problem क्या 4 पे generally most of the teams have their premier batsman at 4. हाँ तो premier है ना. Virat Kohli 2 examples. No, it is not true. Williamson 3rd. हाँ तो बस एक exception. देख मैं तो Ollie Pope choose करूँगा. I'm just talking about the best 2 teams. I feel India and Australia. I feel. Let's vote on this. Ollie Pope. Average of 60, like the century in South Africa. Okay, he has struggled recently. Average of 60 first class in England. English So that's perfectly okay. उस basis पे यार तुम Darren Stevens को ले लो 2 साल में उसने बहुत अच्छा किया. अरे यार Darren Stevens को ले लो तो इंग्लैंड टीम में. वही तो you just can't go. For context अगर संकेत को नहीं पता Darren Stevens 45 का है ना वो. तूने देखा होगा विकेट्स ले रहा है बहुत तगड़ा बैठ. हाँ अभी भी खेले जा रहा है. बट मेरे को देखो टू बी ऑनेस्ट 5 में मेरे को होली पॉप से बेटर ऑप्शन दिख नहीं रहा है एट दिस मोमेंट. चलो अब मेरे को इसका आंसर मेरे को पता है. 6 नंबर 6 तो सबको पता है. ये लिख ले ऋषभ दमदार पंत. थोड़ा ऋषभ पंत बात कर लेते हैं क्यों भाई उसका एक सेकंड उसका भाई इसका तुमने एक फ्री प्रमोशन ठीक है द पंत कंपनी और द पैंट कंपनी तुमने देखा क्या भाई क्या ब्रांड बना रहा है लौंडा. क्या ब्रांड बना दिया भाई उसने खुद का. मजा ही आ गया भाई मेरे को तो देख के. एंड यार वो कौन सा मीम था यार मेरे को याद नहीं आ रहा. वो बिल्कुल परफेक्टली फिट करता है यहाँ पे. चल कोई नहीं टेंशन ना ले. कुछ ब्रांड बना दिया कुछ. अच्छा वो समझ गया. एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया. मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया भाई धरावी साइड में. गाइस लाइक ऋषभ पंत हो गया. अब लेट्स मूव ऑन टू द बॉलर्स. नंबर 7 मेरे पास ऑलराउंडर है लेफ्ट आर्मर. यस the heartbeat of CSK. We know who it is. Yeah. The school boy Sam Curran. School boy diving classes. Again, some people might argue कि Sam Curran के not so very flattering stats. Strike rate of 60. Okay. And batting average, if I talk about, his average is in test matches is 25. Okay. But I'll bring you guys back to Ben Stokes' early days. Okay. If you remember, he had got a pair against India in the last test match. He really struggled when he came in. Also a pair in a Perth test match. याद है जब पिच बहुत गंदा था एक एशेज का टेस्ट मैच. हाँ बहुत ही गैबा में वो रायन हैरिस वाला ना. Ayush, I know you have some I know you have some insight about Ben Stokes. We'll talk about that in some other podcasts as well. Oh, that one. Oh, yeah, okay. Coach one. We'll talk teaser about तो दे दो. नहीं अभी तो वो है बेन स्टोक्स थोड़ा सा कलरफुल इंसान है ना तो उसके बारे में वो इंडिया आया था तो मेरे कोच है तो उनके साथ काम किया था तो उन्होंने कुछ स्टोरीज बोला मुझे तो बाद में. So I think Sam Curran
if I just go beyond stats, first of all, he's 20. I'll just check his exact age. 22 I 20, think. 22, 23 का 99 होगा। कौन है शायद वो? Yes, and मुझे वो भी पता है। भाई ये मैं नहीं, बता guess रहा हूँ है। कुंडली निकालना He is- बाकी है शार्प का बस. He's 23. हाँ, he's and, 23. he has played 21 test matches, Hmm. which tells us people have faith in him. Right. Okay? And he's a player who makes things happen. And he might not get you the best wickets, I agree. Outside of England, with the style of bowling he has, where it's a very dibbly dobbly, irritating bowler. Okay, not Yeah. a lot of space, irritating bowler who just hits one Yeah. length and swings it. Maybe outside England he will be bashed, but I feel right now as an opener, as an all-rounder, one person I had in mind was Ian Mulder. Shalv But might I be think knowing but one is sample size and two it's too early for him to comment. I mean, Too early, in the and chances I- he's got, he's not done very well. हाँ. Sam Curran has grabbed his chances. भाई सैम करन And I have- अंबाती रायडू का रह के 3D भी बन गया है. सैम करन विजय शंकर. एक तो सैम करन के फॉर पे उसके जो ग्लासेस है वो भी जाते हैं, इतना अच्छे हैं, तो उसके लिए भी मैंने सोचा उसका, तुम सबने देखा होगा सैम हाँ, उसको थोड़ा क्रेडिट बनता है यार, इतने महंगे खरीदे उसने. हाँ, अगर मैं वीएन मोल्टर का भी देखूं तो नथिंग ग्रेट, 40 स्ट्राइक रेट है, वो ज्यादा खेला भी नहीं उसने, बट आई हाँ थिंक वही, और उसको जो 4-5 चांस मिला उसमें भी उसने गंदी मचाई, उसने ऐसा कुछ ग्रेट नहीं किया. लोग उसको डोमेस्टिक में रेट करते हैं मोल्डर को, बट आई थिंक सैम करन. Right. Yeah, Sam Curran any day over Mulder यार. So Number 8. Number 8 तो same. I mean, I guess I just hope it's the same. Number 8 is the youngest player evergreen. Rashid Damdar The Khan. daddy of all. Daddy, I think Rashid Khan का अगर हम थोड़ा justification दे, some people might think कि राशिद खान, some जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो राशिद खान को इंडिया का जो पहला टेस्ट मैच है हाँ वो अच्छा, बट देख टू बी ऑनेस्ट बुरा नहीं था यार, बुरा नहीं था. प्लेयर को to be frank, just basis one innings you cannot guess that. Just basis one performance, I mean देखो उस हिसाब से उसने 10 विकेट फॉल भी लिया, उस हिसाब से उसको लिया. हाँ राइट. तो एक मैच की बेसिस पे we cannot judge, but जो उसने हमें T20 में हमें सैंपल साइज दिया है, basis that, I mean it's very very difficult to get him out of this 11. मैं T20 में चल उसको हटा भी रहा हूँ. Recently, okay, he bowled in a match against West Indies. Shalv, you close to 60 to 65 overs. हाँ. अबे 90 plus यार, 90 plus overs. In a day. 92 I think. Overall 90 था, in a day उसने डाले थे. तो एक डे में 60 नहीं डाल सकता. नहीं मतलब मैच खराब है. दोनों मिला के उसका 90 प्लस ओवर्स डाले थे, एंड उसका एवरेज 22 पॉइंट. तो ये नहीं है कि हम बस ना उसको T20 के बेसिस से ले रहे. हाँ ये बात सही बोल रहा है. उसका ऑल्दो चल ऑपोजिशन में भी उतना अच्छा थे नहीं, बट आई एम सेइंग कि जस्ट राशिद खान को तुम निकाल नहीं सकते. देख राशिद खान को मैं बिल्कुल नहीं निकाल सकता, बट यू नो आई वुड स्टिल लाइक टू गिव अ गाय अ शाउट आउट. आई मीन जस्ट फॉर अ मेंशन, आई मीन मेहदी हसन, बांग्लादेश. Mehdi Hasan, yeah, I also plan to give him a shout out. That guy deserves a shout. Shout out to Mehdi At least Hasan. a shout. No, but you know his stats don't do justification to his talent. नहीं stats छोड़ो, but that is what I'm saying. He just deserves a shout, not a place. Yeah, agreed. My place is also. So I think Rashid Khan, yeah, there's a sheer the magnitude of the player he is, and I think there's the passion and zeal he has, and in test matches with sample size, the performance has given, Rashid Khan can be discarded. ठीक है. Number 9. Number 9. We have one pacer, one spinner though. Okay, we'll talk about the spinner later. I think one pacer, Shaheen Afridi, is fixed. I think yeah, right. Shaheen Afridi is fixed. The other pacer I have. So but like is he at number 9 for you all? Just put him at 11 यार. Doesn't matter. ठीक है. That guy can't bat shit. Doesn't matter. ठीक है. 9. By the way, Shalv, you haven't yet talked about the one player who hasn't played international cricket yet. Yeah, that's my number 10. My number 10. I mean, yeah. Is but like wait. Who's your number 9? I'll put Shaheen Afridi at number 11, but who's your number 9? Who can someone who can bat? Okay. Bat 8 was Rashid. 8 was Rashid. Yeah, who's 9? Who's 9? 9, I don't know that. But my player uncapped is Gerald Coetzee.
from Okay. South Africa. Gerald Coetzee from South Africa. He recently got picked up by Rajasthan Royals also. Gerald Coetzee. Yeah, as a replacement. As a replacement, whatever sir, he as a replacement ही वो तो उसके सारे चले गए घर के, अलग बात है. But I think Gerald Coetzee is an upcoming player. Great strike rate of 48. Wow. Average of 24. Sample size is pretty less, but he is set to be this. But wait, did you say great strike rate of 48? अरे बॉलर है यार वो. अच्छा हाँ हाँ. क्या कर रहा है यार तू? अब ऐसे टेस्ट मैच में 48 है भी तो चल. But नहीं यार 48. हाँ बुझा रहा तो आई थिंक जेराल्ड कोएत्जे मैं ना इंडिया में देख रहा था. मैंने देखा प्रसिद्ध कृष्णा, बट प्रसिद्ध कृष्णा खेल गया है. मैं फिर अपना केकेआर भी नहीं है, he is 25 or 27 I think. हाँ मैं फिर अपना थोड़ा केकेआर बायस से नागरकोटी को देखा, शिवम मावी को देखा, बट मुझे उनमें लग नहीं रहा वो मतलब maybe. You know what I mean I have absolutely no idea, but Shivam Mavi, I mean he's not in contention, but he deserves a mention. I mean he does. I think मैं stats छोड़ो, stats छोड़ो बस उसका, अबे stats छोड़ो बस उसका 1 for 13 वाला spell देखो. You just get to realize his potential. फिर तू टेस्ट मैच तूने मुझे बोला टी20 पे मत जाओ. तू आयुष तू देखेगा ना, वो टेस्ट मैच बॉलिंग कर रहा था उसने, तभी उसके सारे ओवर पहले 8 में खत्म कर दिए. तू टी20 पे ऐसे कंपेयर. फिर मैंने एक प्लेयर का नाम आयुष यार, फिर तो राशिद खान को जूत मार के निकाल दो यार. नहीं मैंने जस्टिफाई किया, टेस्ट मैच भी दिखाया मैंने भाई. क्योंकि उसने एक मैच में 90 ओवर डाले, इसलिए तू उसको जस्टिफाई कर रहा है. नहीं मैंने तुझे 10 मैच के स्टैट्स बताया उसके, एक मैच का नहीं बताया यार. देखो स्टैट्स खेलना है यार, तो स्टैट्स ग्रुप पे चलते हैं. मेरे को मैंने अभी रिसेंटली सीखा है. तू तो परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, मैं 10 मैच की परफॉर्मेंस बताया उसका राशिद खान का. 10 मैच. आयुष देख, कुछ लोगों में तुम स्पार्क देते हो, वसीम अकरम और वकार यूनिस में तुमने परफॉर्मेंस नहीं देखा था. हाँ ये बात है. तू भाई उसने गली से उठा के उसको डाल दिया. राशिद खान शिवम मावी को कंपेयर करेगा तू? इतना नहीं, मैं नहीं कर रहा. For me it is Gerald Coetzee from South Africa, young terror pace bowler, and number 9. If he has been picked up by Rajasthan, there must be something. Right. Agreed. Rajasthan. अच्छा, okay. If you've okay, I get your point. I get your point. मार्को येंसन बोलेगा तू? ना मैं नहीं बोल रहा भाई. मैं मार्को येंसन बोल ही नहीं रहा. वो तो गंदा है. उसका एक्शन देख के मेरे को उसको बहुत अजीब हाइप था ब्रो. अजीब हाइप था. मेरे को हाइप समझ में नहीं आया उसका. नहीं देख, उसका टैलेंट है, आई एग्री, बट उसका एक्शन इतना घटिया. उसका बेटर एक्शन मेरा है. मेरा भी. नहीं तो लेग स्पिनर है. अरे पेसर जब था. राशिद सलाम राउंड द स्टंप राइट आर्म करो यार. तुम दोनों 2 मिनट बात करो, 1 सेकंड तब तक म्यूट करें. बट what's your number 9? खा लिया चल किसी ने. What's your number 9? My shout is Ishan Porter, and that guy is going to be my uncapped player. He's been in the IPL for 2-3 years. He's not played, but he's been there. Now that'll be a good debate between Ishan Porter. अगर तुम जेरल्ड कोएत्जे का दे रहे हो कि उसे राजस्थान ने उठाया है, तो ईशान पोरल बेचारा 2 साल से बेंच पे पड़ा है. वो 2 साल से उठाया हुआ है. Proving yourself to be a pace bowler in India is a lot more tougher than proving yourself as a pace bowler in South Africa. Agreed. But my point is ईशान पोरल और जेरल्ड कोएत्जे अलग बात है. ईशान पोरल एक डोमेस्टिक प्लेयर है, ठीक है. अगर तुम डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल आईपीएल का लेवल अलग है, मानता हूँ, बट इंडिया में डोमेस्टिक प्लेयर्स तो हो ही जाते हैं. इंडिया में अगर ओवरसीज आईपीएल में आ रहा है, इट इज अ मोर वर्थ. ओके, तो ईशान पोरल मैं तो खुद बहुत बड़ा उसका, मैं चाहता हूँ वो खेलो. बंगाल का भी ईशान पोरल इज अ गुड प्लेयर, गुड लाइन एंड लेंथ बॉलर. बट अगर मैं ये लाइनअप देखूं, शायद तो अग्री करेगा, सैम करन व्हाट टाइप ऑफ बॉलर ही इज, स्विंग बॉलर. Top of the Shahin Shah, pitch up seam bowler. Gerald Coetzee, absolute gun. He will, if you people, you can Google his ball. Absolute gun. He will come and bang it in shot. And that is the reason I feel that is just because of the sheer conditions he plays in. मतलब अगर तू इंडिया में ऐसे, तो भाई इंडिया में I can't play with 3 pacers, can I? अब तो साउथ अफ्रीका में ये थोड़ी कहेगा उसे कि स्विंग करा. हम इंडिया की टीम थोड़ी बना रहे. अबे बेसिकली माय पॉइंट इज कि तुम अगर जेरल्ड कोएत्जे को इस बेसिस पे ले रहे हो कि वो सिर्फ पिच पे बॉल डालता है, छोटी बॉल डालता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वो ही हेल्प करता है. उस बेसिस पे नहीं ले रहा मैं. तू हिट द डेक के बेसिस पर ही ले रहा है उसे.
मैं बोल रहा हूँ कि मैं पहली तो बोल रहा हूँ कि वो अच्छा बॉलर है अगर और ठीक है। सेकंड पॉइंट है इस अटैक में वो वैरायटी तू अगर चल तू फिर नील वैगनर तो जानता है कैसा बॉलर है ठीक है हाँ नील वैगनर ऐसे जो बॉलर्स होते हैं ना जरा कोई टाइप के किसी भी पिच पे हो डेड पिच है मरी हुई पिच है ना वो आकर ना मारेंगे मार के ना उसको लाइव करेंगे तो नील वैगनर भी सेम टाइप बॉलर है तो न्यूजीलैंड इतनी पोटेंट तो अगर देखेगा यूज नील वैगनर रिसेंट भाई देखो काफी टाइम से टीम में बट जो उसके बहुत ही अच्छे नोन नोटेबल परफॉर्मेंसेस आए दे हैव कम ओवर 3-4 इयर्स ही हैज लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस चैरल कोटजे ने टोटल में 6 मैच से ऊपर नहीं खेले तू अभी क्रिकेट को देख मैं भी बात सुन मैं उसकी बॉलिंग पे थोड़ी जा रहा हूँ मैं टाइप ऑफ बॉलर पे जा रहा हूँ टाइप ऑफ बॉलिंग पे जा रहा हूँ तो उसका टाइप ऑफ हाँ बट बॉलिंग मैं जो मैं देख टाइप यू कांट डिफाइन अ टाइप इफ यू डोंट हैव अ सैंपल साइज लार्ज एनफ आई मीन 5 we मैचेस यू have जस्ट बेसिस what how many matches has he played tell me but listen you know how what type of bowler he is when you first see the bowler you can say if he's a good bowler or a bad bowler when you first see the bowler when you see his stats okay you know what kind of bowler he is Ishan Porel very good prospect okay he's just 22 years old very good prospect I like him also and I would mind him for the 12th man but I'm saying just for the sheer talent and pace this guy has with the record and the type of attack I have in the team I think Gerald Coetzee for me. Gerald I just Coetzee. then basis that I think if it's just that then I would rather say Naseem Shah does deserve a shout too I mean देख मुझे पता है वो 23 साल का नहीं है पर assuming वो है नहीं वो तो है नहीं then I would still keep then I would still keep him in the debate I mean अगर तू कह रहा है कि 6 मैच के सैंपल साइज पे you can define कि वो कितना अच्छा हो सकता है उसका टाइप क्या हो सकता है then Naseem Shah उसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है हम एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के बिना प्लेयर की बात कर रहे हैं हाँ एक अनकैप्ड चल ठीक है चल उसको छोड़ दे नसीम शाह को छोड़ दे ना नसीम शाह को कैसा आ गया आई थिंक चल ठीक है नहीं आई वुड स्टिल गो विद ईशान पोरल आई मीन देख आई एग्री तेरा टाइप वो है बट टू बी वेरी फ्रैंक साउथ अफ्रीका में तेरे को बहुत ही रेयरली कोई ऐसा बॉलर मिलेगा आई मीन डेल स्टेन तो था ही भाई वो कुछ भी कर सकता था उसको मैं छोड़ रहा हूँ और वर्नन फिलैंडर भी बहुत ही टाइप स्पेसिफिक था जो सिर्फ स्विंग कराता था बट तेरे को रेयरली कोई ऐसा बॉलर मिलेगा जो अप फ्रंट जाके स्विंग कराए बहुत ही रेयर होगा लुंगी ईडी तेरा हिट द डेक है वो स्विंग कराता है शॉन पोलक हाँ शॉन पोलक नहीं शॉन पोलक आई मीन हाउ ओल्ड इज दैट गाय अरे तो उसको थोड़ा लेने की बात कर रहे हैं and listen आयुष no how old I mean अरे how old as in उसका केस स्टडी पुराना ऊपर से शॉन पोलक developed into a swing bowler late into his career he started off as a hit the deck guy for I mean after his 30s he shifted to swing bowling because he could not bowl at 145 anymore how does this is मेरी बात how does it matter मैं टाइप ऑफ बॉलर बोल रहा हूँ अगर ऐसा देखा जाए तो फिर हम अश्विन को लाइन से बेटर क्यों बोलते हैं हम क्यों बोलते हैं बोल सकते हैं अश्विन इंडिया में खेलता है वो तो बेटर टर्न करेगा ही अगर वो खेलता है तो खेलता है अगर वो हिट द डेक बॉलर है तो कंडीशन फेवर करते हैं उसको तो फेवर देख वो ठीक है तेरा पॉइंट ठीक है बट तू उसको सिर्फ टाइप पे नहीं ले सकता ना तू उसको मैं इस अटैक के हिसाब में इसको दो रीजन दिए टाइप मेरा सेकंड रीजन है फर्स्ट मेरा बेसिस उसका स्टार्ट है सेकंड रीजन मैंने ये दिया है सेकंड रीजन जेरल्ड कोएट्जे हैज हैड अ लॉट ऑफ हाइप तुम ऐसे पिक्ड अप नहीं होते ठीक है रीजन ठीक है अबे हाइप देख हाइप तो बहुत लोगों का होता है हाइप बट हाइप डज नॉट ऑलवेज मीन सक्सेस आई मैं लगता है पोरेल अगर लो भी लोगे तो मुझे वो नहीं बट कोएट्जे आई थिंक द जस्ट फॉर द sheer talent this guy has Ishan Porel maybe has more because Ishan Porel is more consistent in line and length okay but you tell me if you have a spell of where you have to take 3 wickets in a spell would you rather who has more wickets Jimmy Anderson or Shoaib Akhtar Jimmy Anderson you can't compare these I mean are you telling me that Ishan Porel is similar to James Anderson listen if you compare it to them one is a liner length bowler to फिर से गलत comparison no wait don't tell me you think that Ishan Porel is a liner length that guy bowls 140 plus and that guy major that guy can hit the deck I think Ishan Porel is really underrated though even I mean that guy can light up a pitch like anything and he's just not got a chance that's different even Jimmy Anderson was a very fearsome pace bowler I'm saying comparison में James Anderson was never that guy was bowling at 140 when Jimmy Anderson started he was 140 you can check it only in 2003 otherwise he was bullshit 8-9 he started I'm saying compare the type of bowler Ishan Porel majorly line length he has pace. Ayush, I agree I don't understand why you think he देखो सिर्फ line और length लगाया it's not that he's just not that guy जो off stump के बाद डालता रहेगा और पुजारा जैसा बैट्समैन लीव करता है I'm saying see obviously everybody has their own dimensions I'm saying majorly speaking अभी अगर तू जिमी एंडरसन का माइंड में आता है जिमी एंडरसन ऐसा बॉलर आता है तेरा माइंड में तेरा क्या आता है पिचिंग ग्लेन मगरा
अब तेरे माइंड में क्या आता है? ग्लेन मैकग्रा बाउंसर भी डालता था, सचिन डक करता था, एलबी होता था, ठीक है ना एलबी नहीं एसबी एसबी, हाँ नहीं हाँ, shoulder. शोल्डर हाँ। बट तेरा जब तू ग्लेन मैकग्रा को सोचता है, मेजर स्ट्रेंथ क्या था उसका? हिट द टेक, हिट वन लाइन, हिट वन लाइन, हिट वन लाइन, ठीक है। जिमी एंडरसन स्विंग इट। ईशान पोरेल तो उनके क्लास का आधा भी हो जाए तो अच्छी बात है। टाइप ऑफ बॉलर मैंने ईशान पोरेल को सैयद मुश्ताक में देखा है, मैंने ईशान पोरेल को सीएबी में देखा है। ईशान पोरेल उस टाइप का बॉलर है। जेराल्ड कॉइट्जे, मैं दोनों को वो नहीं कर रहा, बट जेराल्ड कॉइट्जे इज द शोएब अख्तर मोल्ड ऑफ बॉलर। जेराल्ड कॉइट्जे इज जोफ्रा आर्चर मोल्ड ऑफ बॉलर, हु इन अ डेड पिच इज अ मिचेल देख बेसिकली somebody who bowls at 150 जो मरी हुई पिच पे कुछ Yeah, कर देख 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 एक बात कंसिडर करने के लायक है आयुष की तरफ। We already have Sam Curran and Shaheen Afridi in our team, so हमें एक hit the deck वाला bowler चाहिए। Hit the deck, Shaheen Afridi swings it. नहीं, I don't understand why you don't think Ishan Porel is a seam bowler. I mean, वो ऐसा नहीं है। देख comparison point के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हम बोल नहीं रहे, but comparison में you can't tell me कि you can ये बात है। hit the deck. Ishan Porel won't come and do it as consistently as देख ये बात सही कह रहा है। देख Ayush, that is because they play in different places, यार. Come on. But it doesn't matter. I want the end result. result. हाँ देख it does. It doesn't matter. अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन है। अगर तुम्हें हिट द डेक बॉलर चाहिए, ठीक है, हिट द डेक बॉलर, मैं बॉलर नहीं पूछा, तुम किसको लोगे, शमी या बुमराह? ऑब्वियसली बुमराह। बस पर ये कंपैरिजन मैं बोलूं कि अलग कंट्री से ले लो ना, अलग कंट्री से तुम ले लो यार। हम सैंपल साइज अलग जगह से कंपेयर कर रहे हैं संकेत। सो शमी एंड बुमराह इज नॉट अ डिबेट। सेम कंट्री से ना, तो इसके ले नहीं सकते। आई थिंक संकेत, अगर रवि अश्विन और नेथन लाइन, ठीक है, फिर हम नेथन लाइन कोई रवि अश्विन से नहीं, तो फिर रवि अश्विन का बेटर क्यों बोलते हैं? हम बोल सकते हैं यार रवि अश्विन तो इंडिया से है, उधर स्पिनर्स ही बनते हैं। वो गलत डिबेट हो जाएगा, राइट? हाँ तो लेकिन फिर भी अश्विन एनी में बेटर है। आयुष मेरे को बुरा मत मानियो, बट भाई मुझे बुरा मत मानियो, बट टू बी फ्रैंक मैं इस डिबेट को सपोर्ट करता हूँ। तुम लोग को अश्विन बेटर लगता है, बट आई स्टिल थिंक नेथन लायन इज अ टैड बेटर। इंडियन बुले मैं इसका शाल्व का इंस्टाग्राम आईडी लिखा रहेगा, तो लोग उसे अप्रोच कर सकते हो। भाई शाल्व, मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर द हेट यू विल रिसीव आफ्टर दिस। नहीं देख अनन, आई एम नॉट सेइंग दैट नेथन लायन, आई एम नॉट सेइंग दैट देख ना आई एम जस्ट जस्टिफाइंग कि वो दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं, दे आर ऑफ द सेम क्लास। हां नहीं, I mean, 19-20 है। डिबेट इतना क्लोज है दैट मैं उनमें से किसी को क्लासिफाई नहीं करना। 19-20 जस्ट बेसिस बोलेंगे ना, अश्विन इज बेटर एज अ पैकेज। आई मीन वो बैटिंग भी बढ़िया करता है, नेथन लायन मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूं, बस बॉलिंग। ओए दैट इज अनदर डिबेट। एक सेकंड, मेरे को नंबर 9 देखने दो। अश्विन बेटर सब जानते हैं। आई थिंक कोविड से जस्ट बिकॉज़ साउथ अफ्रीका से है, तू नहीं बोल सकता कि हिट द डेक बॉलर तो बनेगा ही। क्यों? वो ऐसे अगर यही रीजन होता तो साउथ अफ्रीका स्पिनर कभी निकलते ही नहीं लाइफ में, इंडिया से पेस बॉलर निकलते ही नहीं लाइफ में। हमारे शमसी भैया कहां से आते हैं? तबरे शमसी, महाराज, पॉल एडम। महाराज तो शायद इंडिया का ही है, महाराज इंडिया का ही है। वो गया था, वो जैसे अपने स्कूल के लोग जाने वाले थे ना साउथ अफ्रीका, वैसे ही वो भी गया था केशव महाराज। तो आई थिंक यार चल ठीक है, तेरा डिबेट आई एग्री कि वी कांट क्लासिफाई बेसिस रीजन, बट पर्सनली जब मैंने दोनों को देखा है, क्योंकि जेरल कोजी का जब राजस्थान की तरफ से आया था, दे पिक्ड हिम एज अ रिप्लेसमेंट, तो आई हैड अ लुक। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईशान पोरेल मुझे बेटर लगा। आई मीन ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन, बट आई थिंक आई कुड नेवर इमेजिन इतना हीटेड डिबेट होगा बिटवीन नंबर 9। ऑब्वियसली अनकैप्ड है ना, तो इस पे डिबेट होगा। हां, अनकैप्ड पे तो होना ही था। आई मीन दैट वाज एक्सपेक्टेड। आई थिंक for me is Gerald Coetze, for the stats he has and for the type of attack we have here, Gerald Coetze, rest up to the adjudicator। और पहली बात तो एक सेकंड, ईशान पोरेल सीएबी में खेलता है, बंगाल में, कोलकाता में खेलता है, और तुम जानते हो उधर क्या पिचेस बन रहे हैं। संकेत तू जानता है, ईडन गार्डन्स की बात कर रहे हैं। ईडन गार्डन्स अच्छे बन रहे हैं यार। गांगुली सिंगल हैंडेडली चला रहा है ब्रो। अभी रिसेंट में तो दे हैव बीन बैटिंग फ्रेंडली। आई मीन रोहित शर्मा का तुम वहां पे रिकॉर्ड देख लो, दैट शुड बी। अरे सिर्फ ईडन गार्डन्स नहीं है ना, बट ये भी तो समझ, सिर्फ ईडन गार्डन। और तू अब यार, तुम लोग जानते हो ईडन गार्डन्स का पिच कैसे बनता है। तुम केस इन पॉइंट ले लो, लास्ट टेस्ट मैच हुआ था, मैंने खुद देखा था अपने आंखों, कैसा लाइवली पिच बनता है। बिल्कुल लगा सबाइना पार्क में खेल रहे जमैका में। तो ये भी तुम लोग अगर विराट कोहली के पिंक बॉल टेस्ट मैच जो ईडन गार्डन्स में हुआ था उसके पोस्ट में जाओगे तो तुम्हें आयुष दिखेगा। बहुत ही छोटा सेलेब स्टेटस। For me, Gerald, I think, and this, I think, for me, Gerald Coetze.
I guess it's up to the moderator. I mean, I still feel that he'll go for it. Don't put me in the spot, guys. No, you have to. You are That's the your one there. job. I mean, that is how Shalv, you pick ठीक that है. position. Take. To be honest, looking at the team combination, like I can say कि ईशान पुरल better player है, but looking at the team combination, I'll go with Koitse. एक तू निशंका को छोड़ दिया, कोएट्जे को ले लिया. ठीक है, थैंक यू. अरे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मैंने ना अपना बॉलिंग लाइनअप रखा था. I picked up Jaden Sales also, पता है? Jaden Sales was in my mentioned list. 3 विकेट भी लिया है. पता है, I mean I know it's totally, but मैंने उसके जो spell, I mean I saw his 3 wickets, like they were exceptional. तो क्योंकि वो मेरा hit the deck guy था, and that is why I picked up Ishan Porel and Shaheen Afridi. I think कोएट्जे. I think हम एक और नाम अगर I mean our combination is the same, it's just that the bowlers are different. Number. I think एक और अगर नाम बोलूं इधर, maybe चेतन साकरिया. Can we think of him? Too early है यार. तू बहुत जल्दी है यार. मैं बस बहुत बोल जल्दी रहा हूँ. Maybe. इंडियन टीम ने maybe वैसे 10 years ये down the कंसिडर, line. इंडियन टीम ने ये नहीं सोचा बहुत जल्दी है वैसे. इंडियन टीम ने नहीं सोचा, ये बात याद रखना. By the way, उसको T20 में लिया है, by the way, टेस्ट में नहीं लिया है. हाँ वो तो है. I feel Unadkar had to deserve to pick. Okay, चलो moving on. My spinner. नहीं, but Ayush, they didn't pick him for the test. ना अगर टेस्ट होता तो Unadkar would have been a better bet, but they've picked him for T20s, and Unadkar को I think they've discarded more or less. बेचारा उनका तो बेचारेगा वो अनलकी रह जाता है कभी-कभी T20 में. उसका थोड़ा वो भी नहीं भाई, but to be frank, उसका सिर्फ 2017 वाला सीजन अच्छा था. उसके बाद उसने गंदी मचाई. वैसे पिक्ड हुआ था. उसने डोमेस्टिक में अच्छा किया है, रणजी में अच्छा किया. दैट है. अमीर लौंडा हो चुका है अभी तक. 68 विकेट्स. अभी तक अमीर लौंडा हो चुका है, हमेशा बिग प्राइस. भाई वो इतने पैसे कमाते हैं, वो पूरा पीएसएल चला सकता है, फिर भी उसके पास आधे पैसे बच जाएंगे. क्वेटा ग्लैडिएटर. और पीएसएल और शायद अफरीदी बोलता पीएसएल बेटर देन आईपीएल. Number 10 please. एक कॉर्नर में कितने लोगों को ट्रिगर करता है. अच्छा, नंबर 10 स्पिनर शार्ल, दैट इज अ ग्रेट स्पिनर. हाँ, स्पिनर. No, I mean my combination has been very different. I mean I picked up Washington Sundar, so I had 2 spinners already. So But, I've still gone for a pacer. I have gone for Lasith Embuldenia. Yeah, I I've mean heard his more or less name, he's done great. I mean वो चाइना में जो है ना, from Sri Lanka. चाइना में नहीं है. Left arm spinner, sorry. और even I agree. Yeah, I agree. He's been more than decent. हाँ. China man is Lakshan Sandakan. हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया था. नहीं, Embuldenia even I agree. भाई देख तेरा श्रीलंकन फेटिश भी आ रहा है अब, हाईलाइट हो रहा है आयुष. फेटिश नहीं है तुम लोग को. बट अच्छा प्लेयर है, आई हैव हर्ड. एम्बुल्डेनिया, अगर तुम्हें कोई डाउट है उसकी एबिलिटीज पे, नहीं है मेरे को. डॉम सिबली, ही विल टेल यू. टॉम सिबली को नचा दिया था इस बार. भाई उसको तो इंडिया में भी भाई वो तो टॉम सिबली तो पता नहीं क्या ही कर रहा था भाई. वो नाच रहा था. टॉम सिबली ना भाई, जब से उसने खेलना शुरू किया वो सिर्फ नाच ही रहा है. उसने हाँ ब्रो, एक बार 80 मारे थे बस. अरे मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि अब इस बॉल में नाचेगा भाई. मैं तो प्रेडिक्ट करता था. और तो हर बार से था क्योंकि वो हर ही बॉल पे नाचा. बट आई फील लाइक टॉम सिबली को उतना भी नहीं बोलना चाहिए. बट ठीक है, चल उसका बहुत ही मतलब वो बंदा है ना, वो जब आ जाता है ना टीवी में बंद कर देता हूँ कि मुझे थोड़ा अगली टू देख. आई मीन उसकी एफिशिएंसी कम है. आई मीन ही इज अगली टू वॉच, बट अगर वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा ले तो देन उसको थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा. उसकी एफिशिएंसी भी कम है. और उसको भाई विराट कोहली ने क्या बुली किया था ब्रो. तुमने सुना था बैंटर. क्या था? क्रॉली को क्या? नहीं उसको भी किया था. मारने के चक्कर में आउट हो गया. उसको भी बोला था कि फ्रंट फुट में खेलेगा वैसा. बहुत वो उसको बड़ा समझ आ रहा है. उसको बड़ा समझ आ रहा है. बोला तो सही. ठीक है, कोई लगाम थोड़ी है कि उनको भी हिंदी आती है भाई. वो तो आई थिंक. अच्छा, इसमें मेरा एक पॉइंट है. आई थिंक एम्बुल्डेनिया तो अभी अग्रीड ऑन एम्बुल्डेनिया. आई हैव. व्हाट अबाउट नंबर 12? आई थिंक वाज 24. Guys, number 12. देख, he's 95 or 96 one as far as I am concerned. 24 बताता ही नहीं तो कितना साला. हुआ भाई? भाई जी 12th number. 12 see 12 is somebody who is just missed out. So I think it's Sundar. Sundar deserves Agreed. मतलब I think to be very frank I would have put him at number 5. भले Oli Pope को he missed I think 3 spots. He missed 3 spots, right? Yeah, so I think Sundar. Ati Sundar. Who is the captain then? I think it's pretty damn. No, don't tell me don't tell me Pant is a short captain. I mean, okay, he might get it, but not a short Gill. captain. I'll go with Shubman Gill. अरे नहीं यार, उसकी आवाज सुन के उसके टीममेट्स उसे चाटा मार देंगे. उसकी आवाज थोड़ी अजीब है वैसे. अरे यार भाई लॉजिकल बात कर रहा है. ऋषभ पंत.
out of this team, Rishabh Pant. Yeah, Rishabh Pant for me because Rashid- of his sheer character. Rashid- भाई character, उसे हाँ. character थोड़ा कभी-कभी इधर-उधर चला जाता है, पर he's good enough. I think one more person who contests for captaincy, Rashid Khan. Rashid Khan, yeah, but But I would bowler say, injury थोड़ा difficult हो जाता है यार. नहीं, that is okay. Rishabh Pant because I mean, देख ऋषभ तो पंत का मैंने जो कैरेक्टर है जो तुम देखो, मैंने राशिद खान तो देखो, he is not very expressive. Rashid is not very expressive. Pant is expressive. हाँ, मेरे को तेरे से चाहिए वरना बाहर निकल. हाँ. He'll be like that. उतना भी नहीं है, but मकड़ी का जाला हाँ, डाल. basically the point is he can take a very controversial call as captain. I mean, like Right, Dhoni did right. in 2009, 2000. I mean he was a good captain for Capable DC of as well अगर हम लोग देखें तो. नहीं. His decisions have देख- been awful, but that's okay. देख, not necessarily, that's his not first stint. necessarily. I disagree. Not necessarily. He see, was at the end of the day, DC performed well. exactly. Yeah. No, So- that's okay. No, captain. I mean, captaincy तुम तब ऐसे अच्छा कहते हो when he's got his team out of a tough spot. For example, Rohit, he's got his Mumbai Indians out of tough spots many times. So Interesting. अभी ऋषभ पंत का first stint, I'm perfectly okay. ठीक है, but just Hmm. because of the sheer character he has shown, I mean, he deserves to get that spot. Interesting to I guess see. Interesting to see a wicketkeeper batsman in the World 11 being a captain again. And especially him being Indian. हाँ. Good. अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ऋषभ पंत को छोड़ के राशिद खान को छोड़ के who do you think left field way, who do you think can possibly be a leadership candidate for the team? हमने नंबर 3 पे किसको लिया था? मैं तो Pukowski. को लिया था, तुमने Pukowski अबे को लिया। हमारे मतलब Pukowski. after the Pukowski. नहीं, Pukowski को कैप्टन मत बनाओ, पहली पिच से चला. मैं सैम करन को ले सकता हूँ. Are you sure? बच्चा तो क्या हुआ भाई, कभी ना कभी तो बड़ा होगा ही ना. मैं अरे नहीं भाई सकता. कुछ लोग होते हैं जो एवरग्रीन रहते हैं राशिद खान की तरह. I think Zach Rowley. अगर Zach Rowley? वो खेला तो I think उसका टेम्परामेंट मुझे I अच्छा mean, लगता है. देख, to be very frank, I mean, I am eating my words right now, but I think Shubman Gill over Zach Rowley as captain. हाँ. Shubman Gill over Zach Rowley as captain any day. समझा. So guys, अभी आपको टीम दिख जाएगा. तो टीम बस डिस्प्ले हो गया होगा आई थिंक. वैसे भी अनाउंस कर दे. नहीं, वो एकदम लिस्ट आ गया होगा. ये वैसे कर देना, वैसे लिस्ट के साथ ही बोल दे. ठीक है. We've got our openers as Zach Crawley and Shubman Gill. We have Pukowski as our number 3 or 1 down. For 2 down or number 4 we have Cameron Green. Brilliant player man. क्या मजा आता है उसको देख के. Number 5 Lollipop. ठीक है भाई, उसके तो मजाक उड़ाते हैं. लॉलीपॉप बुला रहे थे उसको इंडिया में जब आया था बेचारा. ठीक है. Number 6 we have Rishabh Pant. भाई as आकाश चोपड़ा से दमदार पंत. ठीक है. यार संकेत चिल कर यार, तेरा मॉडरेटर का मजाक उड़ जाएगा इस चक्कर में. Number 7 उड़ने देना. नहीं यार, अच्छा आदमी है वो. मेरे को I like that कमेंटेटर. अच्छा है. टीम पे. Number 7 Sam Curran. एवरग्रीन आदमी है द नंबर 8 अरे राशिद एवरग्रीन तो खान. अभी जो नेक्स्ट आएगा उसके लिए वही है. एवरग्रीन आदमी है द नंबर 8 राशिद खान. जो मुझे 10 साल से 20 साल का है. साउथ अफ्रीकन पेसर who is at our number 9 place. Number 10 Ablania. श्रीलंकन फेटिश पूरा हो गया. श्रीलंकन फेटिश तेरा पूरा हो गया. आयुष. नंबर 11 शाहीन अफरीदी. इसका कुछ और भी बात चल रहा था ना, वो बाद में बात करेंगे. नंबर 12 वॉशिंगटन सुंदर. And that's our team. 12th man Washington Sundar. So thank you guys for watching. Thank you guys for watching. बहुत लंबा पॉडकास्ट था. अगर तुम यहाँ तक आए तो एक पप्पी आयुष की तरफ से थैंक यू. हमें सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, ये सब मत करो. गुड